राइट? कोई ऐसा है जो बेड पे ही पड़ा हुआ है? उठ जाओ, सुबह हो गई। शुरू करें? Yes, sir. चलो, कैन यू ऑल सी द व्हाइट बोर्ड? इज द व्हाइट बोर्ड विजिबल गाइस? Yes, sir. चलो, so the topic that we have decided for today is cyclic hydrocarbons. ठीक है? Now, first of all, you need to understand that since we are on the topics of hydrocarbons, ठीक है, previous few classes में we have discussed about alkanes, alkenes, alkynes, and we started with one of the functional groups, which is your alkyl halides, right? But coming back to hydrocarbons, when you remember the classification in the first lecture, we talked about the classification of these hydrocarbons, right? These hydrocarbons, we classified them as open chain compounds and closed chain compounds, right? So अभी तक हमने mostly open chain compounds की बात की है. Today we will see about these closed chain compounds or the cyclic hydrocarbons. ठीक है? अभी इन cyclic hydrocarbons में भी want you to understand that we are not talking about the aromatic compounds. ठीक है? We'll have a separate session on the aromatic class of compounds. Here we are talking about the same hydrocarbons, alkenes, alkenes, alkynes की बात कर रहे हैं हम, but which are existing in a cyclic form. इतना क्लियर है? बढ़े आगे? Yes, sir. All right. Now, in cyclic hydrocarbons, especially, ठीक है, we will talk in detail about the cycloalkanes. ठीक है? We will touch up upon cycloalkenes का एक बहुत ही important reaction. ठीक है? We don't have cycloalkynes as such in your syllabus, and even cycloalkynes are not very stable. Okay, there is only one condition where you can see a cyclic ring with a alkyne system, okay, which is called as a benzene. Have you heard this term ever? Benzene सुना है कभी? बेंजीन सुना होगा, बेंजाइन सुना है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो. No. No, benzene is this. ठीक है? So benzene, we know it's an aromatic hydrocarbon, and these aromatic hydrocarbons, they usually undergo which type of reactions? Electrophilic, what? Electrophilic substitution, right? Electrophilic aromatic substitution reactions. But they also undergo nucleophilic reactions. Okay? And those nucleophilic reactions occur in two mechanisms, one of which is addition elimination and the other is elimination addition. तो जो elimination addition reaction है उसमें एक benzene intermediate बनता है. ठीक है? Anyway, it was there earlier in the pharmacy syllabus. Now I think it has been removed in the PCI. Nevertheless, we are not talking about aromatics, so we'll restrict ourselves to cycloalkanes and cycloalkenes. Now, if we talk about cycloalkanes, ठीक है, definition बहुत ही simple है. What is the definition? It's a simple cyclic structure in which all the backbone is made of carbon atoms. ठीक है? In cycloalkanes, it is basically a cyclic structure where all backbone atoms are carbon. ठीक है? Apart from carbon रहेगा तो we call them heterocyclic compounds, right? But here we will be restricting ourselves to compounds in जिनके अंदर जो cyclic ring है आपका, वो cyclic ring सिर्फ carbon से बना हुआ है. ठीक है? Now depending on the number of carbons, okay, you can have different types of cyclic hydrocarbon, cyclic alkanes. ठीक है? Depending on the number of carbons, you can have different cycloalkanes. Now the first member of cycloalkane family is your cyclopropane. The first member of your cycloalkane family is your cyclopropane. There is not a possibility of forming a cyclic structure with just two carbons, ठीक है? And one carbon तो सवाल ही नहीं उठता. जैसे हमारे alkanes में the first member was methane, ठीक है? So methane and ethane will not form any cyclic structures. Right from propane we can have
एन प्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपाइल होता है, साइक्लोप्रोपेन भी होता है, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टार्ट्स विथ cycloalkanes या cyclohydrocarbons, it starts with cyclopropane, ठीक है। So a 3-member ring containing all carbons is a cyclopropane. You can also have a 4-member ring system, right? This will be a cyclobutane. You can have a 5-member ring system, ठीक है। This will be cyclopentane and so on and so forth. You can have cyclohexane, cycloheptane, cyclooctane, cyclononane, ये सब भी होते हैं, ठीक है। But we will restrict our discussions to the top 4, which is cyclopropane, butane, pentane and hexane. हम इनके बारे में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। एंड हेप्टेन वगैरह हम आज डिस्कस नहीं करेंगे. एनीवे दे आर all they have different chemistries altogether, they have different types of reactions, they do not follow their leads basically. जो उनके स्टार्टिंग प्रिकर्सर्स हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके जो प्रिपरेशंस होंगे, वो सेम फॉलो नहीं करते, उनके अपनी अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. नेवरदलेस वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द प्रोपेन, ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन क्लास, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. नाउ दो चीजें हैं. आई टेल यू एवरी टाइम वी स्टडी अबाउट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है. क्या क्या पढ़ते हैं हम? what are the 3 things that we study in an organic compound? Nomenclature, preparation, and reactions. Perfect. We study उसका नामकरण, the IUPAC nomenclature system. How do you name those compounds? We study how do you prepare these compounds, and then we study what are the different types of reactions, or basically properties. In properties, both physical properties and chemical properties. ठीक है. So in today's class, we will divide this session into actually 3 parts. I want to divide it in, ठीक है. But let's see how the time permits. There are 3 major things that I want to discuss today. ठीक है. So we will divide the session in 3 parts. One part is where we will be talking about the organic chemistry of these so in the first part we'll talk about the organic chemistry of cycloalkanes, ठीक है. मैंने ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम बात करेंगे IUPAC की, इसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन टेक्निक्स की, इसमें हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस की, ठीक है. वन पार्ट इज अबाउट थियोरी ऑफ दी साइक्लोअल्केन्स. देखो, नॉर्मल अल्केन्स, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स तो स्टेबल होते हैं, ठीक है. बट व्हेन दे टेक अ साइक्लिक फॉर्म और अ साइक्लिक रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, a lot of question comes on the stability. See, most of the drug structures, since you are all pharmacy students, most of the drug structures that you have seen, they contain cyclic structures or cyclic rings, but they are aromatic in nature. Yes or no? अभी तक आपने जो भी ड्रग स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, मैक्सिमम ऑफ देम हैव either 1 or 2 phenyl rings or 1 or 2 ring structures which are heterocyclic, which are phenyl, but all of them are mostly aromatic. There are very few drugs which actually have a cycloalkane type of ring in their structure. Yes or no? Can anyone tell me any drug which has a cyclic ring in the structure which is a cycloalkane, saturated hydrocarbon? Anyone? I'll give you a hint. cyclopropane है उनके स्ट्रक्चर में. एनीवन? ठीक है, ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे बताओगे कि कौन से ऐसे ड्रग्स हैं अवेलेबल जिसके स्ट्रक्चर के अंदर साइक्लिक अल्केन्स हैं, नॉट एरोमेटिक. ओके, आई वांट अल्केन्स. सो क्यों नहीं है? व्हाई आर दे रेयर? व्हाई आर वी नॉट इंक्लूडिंग दी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स इन अ ड्रग स्ट्रक्चर्स और इन सिंथेसिस ऑफ न्यू molecules, new drugs? The reason is most important, which is stability. Right from first lecture we are talking about stability and reactivity of compounds, right? Because I told you it's very simple. If any compound is stable, why will it react? Same cheese hai, it's always inverse proportion, ठीक है. And I also told you every compound in this universe wants to attain stability, ठीक है. हर एक को स्टेबल होना है, हर एक कंपाउंड को स्टेबल होना है. दैट इज व्हाई इट इज अंडरगोइंग रिएक्शंस टू फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स. अब ये जो साइक्लिक अल्केन्स हैं, इनका स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है. क्योंकि सिंस दे आर सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ रिंग ओपनिंग टाइप ऑफ रिएक्शंस. ओके, इनके सिंथेसिस में ही हम जो भी रिएजेंट्स यूज करेंगे, देयर आर हाई चांसेस ऑफ रिंग ओपनिंग रिएक्शंस इफ द रिंग इज अनस्टेबल. इफ द रिंग इज स्टेबल, देन रिंग ओपनिंग इतनी इजीली नहीं होगा. बट मोस्ट ऑफ दीज साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स, okay, we need to understand their stability, and to understand these stabilities there are 3 important theories which were put forth, ठीक है. One theory was your Bayer strain theory. एक था आपका बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इसको एंगल स्ट्रेन थ्योरी भी बोलते हैं,
ठीक है। दूसरा है आपका बीबीटी, ये बिग बैंग थ्योरी नहीं है, ठीक है। इफ समवन ऑफ यू इज थिंकिंग बीबीटी इज बिग बैंग थ्योरी, नो, इट इज कॉल्ड एज बेंट बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। बीबीटी इज बेंट बॉन्ड थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। बेंट बॉन्ड थ्योरी और बनाना बॉन्ड थ्योरी। And the scientists who gave this theory were Coulson and Moffat. So Coulson, Moffat theory. Okay. The first theory which discusses the stability of these cycloalkanes is the Bayer strain theory or the angular strain theory. ठीक है, Bayer strain theory को angle strain theory भी बोलते हैं, ठीक है। Then second theory was put forth by these scientists Coulson and Moffat. So Coulson and Moffat's theory, ठीक है, also called as banana bond theory or bent bond theory. And the most important theory, okay, for cyclic structures, because in cyclic structures we give a lot of priority to cyclohexane type of moieties, right? तो cyclohexane की stability जिन्होंने बहुत अच्छे से define की थी, उनका नाम है शैश. So शैश मोर theory. Okay, so this is the second part. So I told you I want to divide the lecture into 3 sections. One section is where we will talk about organic chemistry of these cycloalkanes. The second is where we'll talk about the various theories that were put forth to explain the stability of these cycloalkanes. And the third part is where we will talk a little about something called as bicyclic compounds and spiro compounds. Do you know what is bicyclic compounds? Anyone? What are bicyclic compounds? Come on. Speak up, guys. बायसाइक्लिक सुना है कभी या नहीं सुना है? नहीं सुना है? किसी ने नहीं सुना है? स्ट्रेंज. हाँ है ना? कैन यू हियर मी गाइस? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अच्छा, आई एम ऑडिबल. दैट मींस यू आर लिसनिंग बट यू आर नॉट रिस्पोंडिंग. ओके. ऑलराइट. सो बायसाइक्लिक कंपाउंड्स, नाम में ही उनका काम है यार. साइक्लिक मतलब क्या? साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखे सारे के सारे, ठीक है. दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. इसके साथ में और एक साइकिल को जोड़ दो, this becomes a bicyclic compound. So bicyclic compounds basically has two cyclic structures in their main structure. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है there are two cyclic structures, one is cyclohexane, one is cyclobutane. They are fused together. अब बाइसाइक्लिक और स्पाइरो में क्या फर्क होता है? स्पाइरो कंपाउंड्स भी एक तरह के बाइसाइक्लिक सिस्टम्स हैं, लेकिन द डिफरेंस इज इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. The difference is in the point of attachment. Now look over here carefully. ठीक है, in bicyclic compounds there are two carbons which are common for both the rings. Yes or no? दिख रहा है सबको? In bicyclic compounds there are two carbons which are common for both the rings. In spiro compounds there is only one carbon which is common. ठीक है, इन कार्बन्स को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स. इन कार्बन्स को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन बाइसाइक्लिक में, ठीक है, स्पाइरो में नहीं. तो ब्रिज हेड कार्बन्स दो होते हैं बाइसाइक्लिक में, हमेशा देयर विल बी टू कार्बन एटम्स, ठीक है. Whereas spiro compounds it has only one common point of attachment. Bicyclic compounds have two points of attachment. Even they belong to the category of cycloalkanes. Yes or no? Yes. Yes. Right. So हम उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. We want to talk about bicyclic and spiro. Most importantly, bicyclic में we will talk about the IUPAC of these bicyclic systems. ठीक है, हाउ डू वी नेम दीज बायसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड्स. स्पाइरो इतना नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, बट इसका नाम बता दूंगा मैं आपको, ठीक है. स्पाइरो में इंपॉर्टेंट चीज ये है, देयर इज अ नेम रिएक्शन व्हिच इज एप्लीकेशन है, वो नेम रिएक्शन आपके सिलेबस में है, ठीक है. हैव यू हर्ड ऑफ अ रिएक्शन कॉल्ड एज पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट? हैव यू हर्ड अबाउट दिस रिएक्शन? Yes. Yes, pinacol pinacolone rearrangement reaction. This reaction is one of the most important reaction for preparation of these type of compounds. Which compounds? Spiro compounds. ठीक है, तो preparation wise it's important, like application oriented wise कभी अगर एक direct question आता है MCQ में, because see GPAT में guys what you need to understand is you don't have to focus more on rectifying things, you have to understand concepts. ठीक है,
the better your concepts are, the clearer the concepts are, the easier the questions will be for you. ठीक है, GPAT में questions will be application oriented. ठीक है, डायरेक्ट questions होंगे but बहुत ज्यादा expect मत करना. ठीक है, so you have to be mentally prepared with the concepts, and that is why I will spend more amount of time on the theory to understand the theory, because theory के ऊपर questions कभी भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, है ना, कि ये साइंटिस्ट ने एंगल स्ट्रेन थ्योरी दी थी, थ्योरी का लिमिटेशन क्या है, सक्सेसफुल स्टोरीज क्या है, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द थ्योरी. थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली थ्योरी में पॉइंट क्या है वो मैं आपको रेक्टिफाई बोलते ना, आई बिलीव इन दैट ट्रांसफर डेफिनेशन, राइट. सो व्हेनेवर आई गिव यू अ डेफिनेशन ऑफ समथिंग, आई टोल्ड यू 3 इडियट्स देखा है ना, हाँ है ना, Yes. तो उसमें मैं कभी भी चतुर रामलिंगम नहीं बनता. ठीक है, आई डोंट वांट टू गिव यू अ डेफिनेशन व्हिच इज देयर इन द बुक दैट यू कैन रीड ऑन योरसेल्फ. My point as a teacher is to make you understand the idea behind it, the concept behind it, right? तो मैं हमेशा कौन सा डेफिनेशन दूंगा आपको, रांचो डेफिनेशन. व्हेन आई एक्सप्लेन यू थिंग्स आल्सो आई विल टॉक अबाउट दैट. ठीक है, इसलिए जब हमने साइक्लिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन लिखा, बहुत सिंपल स्ट्रेट सिंपल शब्दों में लिखा. दे आर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स वेयर ऑल द बैकबोन एटम्स आर कार्बन. डन. शॉर्ट सिंपल स्वीट कहानी. ठीक है, तो आई वांट टू डिवाइड द लेक्चर इन दीज 3 parts. ओके, सो वन पार्ट विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द साइक्लो कंपाउंड्स, one part will talk about the 3 theories, and one part will talk about, this is a very small section, bicyclic and spiro. ठीक है, IUPAC और bicyclic systems and spiro compounds में हम spiro compounds का इतना ही था. Actually, I just wanted to introduce you to what is a spiro compound and what it is formed from. Bicyclic क्यों important है, क्योंकि ये तो cyclic alkane है, but bicyclic compounds, okay, are formed from a very important reaction called as Diels-Alder reaction. ये सुना है इसके बारे में कभी, सुना है कभी डील्स-अल्डर रिएक्शन के बारे में, एटलीस्ट नाम सुना होगा. यस और नो? Yes, sir. कोई भी पेपर उठाओ नाइपर का और जीपैट का, किसी भी साल का, देयर विल बी वन क्वेश्चन ऑन डील्स-अल्डर फॉर श्योर. ओके, देयर विल बी वन क्वेश्चन डेफिनेटली ऑन डील्स-अल्डर एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. इट इज दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड दीज डील्स-अल्डर रिएक्शन एक्चुअली विल टॉक अबाउट दिस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट, बिकॉज इसके अंदर साइक्लोअल्कीन भी कवर करेंगे हम. ठीक है, साइक्लोअल्कीन का आई टोल्ड यू, आई जस्ट वांट टू शो यू वन रिएक्शन ऑफ द साइक्लोअल्कीन्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ द साइक्लोअल्कीन्स, एंड दैट रिएक्शन इज डील्स-अल्डर. But Diels-Alder reaction leads to formation of bicyclic compounds. Diels-Alder reaction is the most common reaction for the synthesis of bicyclic compounds, whereas pinacol-pinacolone rearrangement is one, important reaction for synthesis of spiro compounds. Of course, it will be substituted spiro compounds, not just spiro. Okay, pinacol, pinacolone, so there will be definitely a double bond O. ठीक है, substituted spiro compounds, but nevertheless they are spiro compounds. ठीक है, you can imagine it will be very difficult to fuse two ring structures together. दो रिंग आपस में जब कंबाइन होंगे, क्लैश होंगे, उनके बीच में रिएक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है. तो ऐसे रिएक्शंस जिनके वजह से रिएक्शंस होते हैं, यू नीड टू नो दोस रिएक्शंस, राइट? यस और नो? आपके बेसिक लैब में जो रिएक्शंस करते हो, उनसे ऐसे फ्यूज रिंग्स बनाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ठीक है, सो organic chemistry theory and a little bit about biocyclic and spiro. Which one do you want me to start first? I'll give the choice to you. बोलो. क्या हो गया यार, कहाँ गई एनर्जी? संडे है, एनर्जी गया. आज तो होना चाहिए ना, वीकेंड एनर्जी होना चाहिए. बताओ किससे स्टार्ट करना है. मेक इट इंटरेक्टिव गाइस, कम ऑन. कोई नहीं बात कर रहा आज, क्या बात है. चलो ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली. कूल, शुरू करें. Yes. अभी अभी भी ऐसा आया. Alright. So talking about IUPAC of the cycloalkenes, it's very very simple. ठीक है, IUPAC सिस्टम क्या बोलता है आपको, जब भी किसी साइक्लिक अल्केन को, okay, not aromatic compounds, aromatic compounds is different. Whenever you want to name any cyclic alkane, the prefix, okay, the prefix will always be cyclo. Simple. So cyclo क्या रहेगा आपका, prefix रहेगा cyclo followed by whichever alkane it is. आप बोलोगे क्या सर आप पागल बनाते हो, हमने ये तो लिखे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन. These terms are the actual IUPAC nomenclatures or IUPAC names of the cyclic compounds. समझा ये? तो cyclo followed by whichever alkane or how many ever carbons there are.
ठीक है, so 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, so on and so forth. ठीक है, so this cycloalkane itself is a nomenclature for these systems. ठीक है, कॉमन नेम अगर बात करें हम, तो कॉमन नेम डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी CH2 यूनिट्स आर जॉइंड टू ईच अदर, क्योंकि जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं सब में क्या अटैच्ड है एक दूसरे को, CH2 अटैच्ड है ना। देखो प्रोपेन में इट इज CH2 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 and this, yes or no? In all of these, butane में CH2 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 and CH2. Similarly pentane में भी कैसा होगा, CH2 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 CH2, right? In all of these cyclic structures, nothing but they are all repeating units of CH2. Yes or no? Yes or no? So Yes. common name में क्या होता है, we use the prefix as tri, tetra, penta and so on. Like in case of cyclopropane, the name will actually be tri because there are 3 CH2 and CH2 is called as methylene. Any CH2 thing is always called as methylene, right? So trimethylene, tetramethylene, pentamethylene, ऐसा नाम आ जाता है इनका। क्लियर हुआ? ये कौन सा सिस्टम है? ये कॉमन नेम सिस्टम है। IUPAC नेम क्या है? सिंपलिक साइक्लिक एल्कोन। ठीक है, साइक्लो इज द प्रीफिक्स and whichever alkane you have, propane, butane, pentane, any alkane that you have, so that cyclo followed by the alkane name is the actual IUPAC name. ठीक है, and common name is always depending on how many number of carbons you have trimethylene, tetramethylene, pentamethylene, so on and so forth. इतना क्लियर हुआ सबको? Yes. बढ़े आगे? Yes, sir. अब आते हैं प्रेपरेशन टेक्निक्स पे। ठीक है, तो इसके 4 टेक्निक्स हैं प्रिपरेशंस के लिए। ठीक है, जिसमें से 2 नेम रिएक्शंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, आई विल टेल यू व्हाई। ठीक है, सो द फर्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम डाइहैलाइड्स। देखो हैलोजेंस हमने अल्काइल हैलाइड डिस्कस किया है। आई टोल्ड यू हैलोजेंस आर फैंटास्टिक क्लास ऑफ कंपाउंड्स। आप हैलोजेंस से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो, ये मैंने उस टाइम पे भी बताया था आपको, राइट? सो हैलोजेंस दे आर अमेजिंग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। इसलिए देखो फर्स्ट प्रिपरेशन किसी भी ऑर्गेनिक फंक्शनलिटी जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी वन मेथड फ्रॉम हैलोजेंस, राइट? सो वन प्रिपरेशन ऑफ दिस साइक्लिक alkanes is from dihalides. Then there is a name reaction called as Dickmann condensation reaction. Okay, there's a name reaction called as Dickmann condensation. Dickmann reaction भी बोलते हैं इसको, Dickmann condensation भी बोलते हैं इसको। ठीक है, it's one and the same, right? Then there is one more reaction called as Simmons-Smith reaction. There is one more reaction called as Simmons-Smith reaction. And then there is one reaction which is simply reduction of aromatic compounds. ठीक है, from aromatic compounds. So 4 major preparation techniques. Now these are the cycloalkanes which are single ring compounds. Okay, I'm not talking about bicyclic. Bicyclic अलग है। ठीक है, from these you will find, you will actually get cycloalkanes with 2 rings, 3 rings, 4 rings, etc. ठीक है, शुरू करें? लिख रहे हो ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी लिखने से ही आएगी, बिना लिखे नहीं आएगी। Yes, sir. ठीक है, Yes. so the first one is from dihalides. ठीक है, now in dihalides also we are specifically interested in something called as terminal dihalides. What do you mean by terminal dihalides? In which the halogen atoms are at the terminal carbons. Why terminal carbons? So that those two can actually fuse the ring together. ठीक है, I'll give you a simple example. Say you have CH2 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 chlorine chlorine. There is a reason why I have written this way. This is nothing but 1,3-dichloropropane. 1,3-dichloropropane. Right? So these terminal halides, if you react them with sodium or zinc metal, ठीक है, when you react these terminal dihalides with sodium or zinc metal,
what you get is simple है ना ये, this thing will go out, ठीक है, sodium NaCl will go out, what you end up getting, so when chlorine will leave with its pair of electron, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे अपने अपने, yes or no, and that will lead to formation of a bond between these two. What you get is CH2, CH2, CH2 and this bond, ठीक है, plus 2 molecules of NaCl of course. सिंपल है ना रिएक्शन, क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन बन गया, ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन. डाइहैलाइड्स, especially terminal dihalides, you react them in presence of sodium or zinc metal, okay, they will lead to formation of the corresponding cycloalkane followed by sodium salt or a zinc salt. ये क्लियर है सबको, Yes, sir. लिख लिया, बढ़े आगे, लिखो लिखो फटाफट लिखो. Done, sir. Done. Done. Second reaction is a name reaction, okay, so very important, I want all your focus here. You have something called as Dickman reaction or Dickman condensation, okay, any one thing, you can call it a simple Dickman reaction or Dickman condensation. Now see, there will be lots and lots of name reactions in your entire GPAT as well as NIPER curriculum, even in your B Pharm for that matter, right? So whenever students ask me, sir, how do you remember these reactions, okay, the name reactions especially, I always tell them, हर एक रिएक्शन को याद रखने का अपना तरीका बनाओ, ठीक है, हर एक रिएक्शन को याद रखने का अपना तरीका बनाओ, ठीक है, some or the other way, it can be due to a statement, it can be a simple statement you can remember, or it can be the starting material you can remember, कुछ भी, or it can be the product that it forms you can remember, but try to develop a statement, most probably a statement, क्योंकि statement जब हम सुनते हैं तो हमको याद रहता है, ठीक है. Whenever there is Dickman condensation reaction, there are two things which goes in my mind. As soon as I hear Dickman condensation, मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं. पहली चीज is it is an intramolecular condensation. It is an intramolecular condensation of what? It is an intramolecular condensation of diesters. It is an intramolecular condensation of diesters in the presence of base. In the presence of base. बस इतना ही याद रखना है, ठीक है. It is an intramolecular condensation of diester in the presence of base. इतना याद रखा, पूरा रिएक्शन लिख लोगे, ठीक है. ऑफ कोर्स इसके आगे आप प्रोडक्ट भी याद रख सकते हो. In the presence of base to form beta diketo compound. You can write it to give beta keto esters. Base to give beta keto ester. ये आपका कंपाउंड है, फाइनल कंपाउंड जो बनेगा, ठीक है. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू रिमेंबर दिस, मैं ये कभी याद नहीं रखता. क्यों? क्योंकि as soon as you write a reaction between a diester in presence of base, you can automatically devise the route of what will take forward, mechanism क्या रहेगा, कैसे होगा, वो आप अपने आप लिख लोगे. I'll show you just now. So I said whenever I see Dickman condensation, there are two things which comes to my mind immediately. One is this statement, ठीक है, it is intramolecular condensation of diesters in the presence of base. ये एक स्टेटमेंट है किसका, डिकमैन कंडेंसेशन का, ठीक है. तो एक ये मेरे दिमाग में रिंग होता है, इट इज इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन ऑफ डाइएस्टर्स, ठीक है. दूसरा चीज मेरे दिमाग में आता है दैट इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू अनदर रिएक्शन कॉल्ड एज क्लेजन कंडेंसेशन. देखो एक ही रिएक्शन में आप दो रिएक्शन समझ सकते हो, ठीक है. इनफैक्ट जीपैट को पढ़ने का एक बेस्ट तरीका ये है, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग स्टडिंग फॉर जीपैट. किसी भी टॉपिक को आप जो पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर अगर कोई और टॉपिक आ रहा है, किसी और टॉपिक को आप रिवाइज कर पा रहे हो, किसी और कॉन्सेप्ट को अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो, करो, ठीक है. तो उससे वो कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होगा आपका, जहां जहां जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं बोल देने का, पढ़ लेने का, समझ लेने का, ठीक है. नाउ डिकमैन कंडेंसेशन, ठीक है, दो चीजें. पहली चीज इट इज इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन. द वर्ड इंट्रामोलिकुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज वेयर डिकमैन कंडेंसेशन एंड क्लेजन कंडेंसेशन डिफर्स. इन क्लेजन कंडेंसेशन it is intermolecular. क्लेजन कंडेंसेशन में सेम चीज होता है, सेम प्रोडक्ट बनता है, बीटा कीटो एस्टर ही बनता है,
लेकिन जो कंडेंसेशन हो रहा है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, दो एस्टर्स के बीच में होगा, डाई एस्टर्स के बीच में होगा, ठीक है। whereas Dickman condensation is a reaction which will happen between diester in the same molecule. ये esters होगा, ठीक है। Claisen condensation happens with esters, two different esters. So if two ester groups are in the same molecule, which reaction will happen? Which reaction will happen? एक ही ग्रुप में अगर दो दो एस्टर्स हैं, दोनों एस्टरिक ग्रुप्स हैं, कौन सा रिएक्शन होगा? टिकमैन कंडेंसेशन होगा, ठीक है। whereas if you have two different esters all together, ठीक है, you will have Claisen condensation in the presence of base. इतना समझा? हाँ ना, लिख लिया इतना? इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। Yes, sir. साइड बाय साइड क्लेजन के बारे में भी लिखते रहो कि क्लेजन इज इंटरमोलिकुलर, ठीक है। इन डिकमिन you have the two ester groups in the same molecule. In Claisen you have two different esters reacting with each other. Now it's a condensation. It's very similar to your aldol condensation. Aldol condensation याद है कुछ किसी को? 3 स्टेप होते हैं उसके अंदर। Base abstracts a alpha hydrogen, attack of the carbon to the C double bond O group, and finally protonation. याद आ रहा है? aldol condensation याद है Yes, कुछ? sir. 3 स्टेप्स होते हैं उसमें। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है यहाँ पर, ठीक है। ये लिख लिया हो तो रिएक्शन बताओ। लिख लिया है सबने? Yes, sir. All right. Now, one important thing is when I say diesters, how will you form these diesters? These diesters are, in turn formed from dicarboxylic acids. There are a lot of acids which are dicarboxylic in nature. Can you give me an example of a dicarboxylic acid? Anyone? Any acid which has two COOH groups? Any compound which has two COOH groups together? ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, सेम टू बायोकेमिस्ट्री। एक तो यही है। What is this? What is it? कौन सा एसिड है ये? अरे बाप रे। You have this, you have this, you have this, you also have something like this. ये सारे के सारे एक ही साइकिल में है, क्रेब्स साइकिल, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। दिस इज ऑक्सैलोइक एसिड, dicarboxylic acid, simple dicarboxylic acid, no other CH2, nothing, just two carbons and COH. This is oxalic acid. आपके क्रेब्स साइकिल में you have oxaloacetic acid, याद आ रहा है? Yes. ऑक्सालोएसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड में ही ऑक्सालो, ठीक है। देन दिस CH2COOH, सक्सिनिक एसिड, CH डबल बॉन्ड, मैलिक एसिड, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, याद आ रहा है? नहीं, आई थिंक दिस इज फ्यूमारिक। सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, हाँ दिस इज फ्यूमारिक होगा। दिस विल बी फ्यूमारिक एसिड, then malic acid, then oxalic acid. So ये सारे के सारे Krebs cycle intermediates है. Now these dicarboxylic acids, okay, it's very simple to make or convert them into ester. Diethyl succinate, diethyl malonate, a very important starting material for which reaction? Diethyl malonate, a very important starting material for which reaction? That's what I'm saying. You should always revise. जहां जो मिलता है रिवाइज कर लो, ठीक है। डाइएथाइल मैलोनेट इज नथिंग बट मैलोनिक एसिड का डाइएस्टर, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, नोविनेजियल कंडेंसेशन, ठीक है। यू हैव पर्किन कंडेंसेशन, नोविनेजियल कंडेंसेशन, स्टोप कंडेंसेशन, ये सारे के सारे नेम रिएक्शंस हैं आपके कार्बोनिल केमिस्ट्री में, ठीक है। एंड इट इज देयर इन योर जीपैट सिलेबस आल्सो, माइंड यू। पीसीआई में है या नहीं है, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग पीसीआई स्टूडेंट्स, सेम 4 स्टूडेंट्स, बट during our time it was there in sem 4. I don't know carbonyl chemistry is in which semester now, but nevertheless it is there in your GPAT syllabus, ठीक है। आपने सिर्फ aldol पढ़ा है, aldol condensation है, क्रॉस aldol है, Cannizzaro reactions है, क्रॉस Cannizzaro reaction है, then you have Claisen condensation, Claisen Schmidt reaction,
Perkin reaction, Novinagel reaction, stove condensation. I'm not trying to scare you. Trust me, इन सबका मैकेनिज्म सेम है. मैकेनिज्म सबका सेम है, वही मैकेनिज्म है, वही स्टेप है. बेस abstracts a proton, attack on the carbonyl carbon, protonation. खत्म. 3 steps. Only thing is the starting material will differ. स्टार्टिंग कंपाउंड या स्टार्टिंग मटेरियल अलग होगा, उतना ही. ठीक है. ऑफ कोर्स कैनिजारो इज अ लिटिल डिफरेंट. कैनिजारो इज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बट ऑल दी अदर कंडेंसेशन, जितने भी कंडेंसेशन है उन सब में यही हो रहा है. ठीक है, बढ़े आगे. तो डाइएस्टर्स आप इनमें से किसी कोई भी डाइएस्टर ले सकते हो. ठीक है. सो विल टेक एन एग्जांपल ऑफ वन डाइएस्टर व्हिच इज लेट अस टॉक अबाउट CH2, CH2, C double bond O, C2H5, another molecule of CH2, CH2, C double bond O, C2H5. ये क्या है? ये हमने एक डाइएस्टर का एग्जांपल लिया. नाउ I told you it's a reaction of intramolecular condensation of a diester in the presence of base, right? So we can have simple sodium NaOC2H5, sodium ethoxide. ठीक है. Any alcohol or even simple NaOH also will work. ठीक है. Now let me write this CH and H. सबसे पहला क्या होगा? Base abstracts proton. Yes or no? सबसे पहला base will abstract proton and what you will get is क्या मिलेगा? CH2 CH. इसके पास से प्रोटॉन गया. ठीक है. तो you'll have CH minus. प्रोटॉन गया है ना? प्रोटॉन when it goes it leaves the electron behind, right? C double bond O, C2H5, CH2, CH2, C double bond O, C2H5. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. ऑलराइट. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अभी ये क्या है आपका? ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है. ये कार्बन के जो बॉन्ड्स है, दिस इज ऑलवेज डेल्टा माइनस, दिस इज ऑलवेज डेल्टा प्लस. इट्स अ कार्बोक्सिलिक दिस थिंग. इट्स नॉट अ कार्बोनिल कार्बन. ठीक है. डू नॉट judge it as a carbonyl carbon. This is a carboxylic carbon. But carboxylic carbon may be these two oxygens share the negative charge. Carbon is always positive charge, partial. Okay. So this negatively charged thing will move here. So that negative charge comes here. This has to go out. Okay. So C2H5O, this is a leaving group. Okay. This will combine with the proton and form methanol. Okay. And this there will be a new bond formation between this carbon and this carbon. ठीक है. कैसा बनेगा? क्या बनेगा? you'll have CH2 CH. इस CH के साथ एक नया कार्बन का बॉन्ड बन रहा है. इस कार्बन को क्या अटैच्ड है? CH2 अटैच्ड है. इसको एक और CH2 अटैच्ड है. यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड है. इस कार्बन के पास एक C डबल बॉन्ड O है, क्योंकि O C2H5 तो बाहर निकल गया था, है ना? और इस कार्बन के बाजू में यू ऑलरेडी हैव अ C डबल बॉन्ड O C2H5. ये समझा सबको? देखो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नंबरिंग दे रहा हूं मैं. ठीक है. दिस नंबरिंग इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं. 1 2 3 4 5. ठीक है. एंड यहाँ पे उनको मैच करो. सो यू अंडरस्टैंड क्या किया हमने. देखो देयर विल बी अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन. वो हो गया क्या? एक नया बॉन्ड बना फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में. फिफ्थ Yes. कार्बन पे आपका C डबल बॉन्ड O है. सो फिफ्थ कार्बन पे मेरा C डबल बॉन्ड O है. और एक साइड में यू हैव CH2 व्हिच इज फोर्थ एंड थर्ड कार्बन. एक साइड पे आई हैव CH2 थर्ड फोर्थ एंड थर्ड कार्बन. बराबर है इतना. और फर्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O C2H5 है. यस और नो? Yes. कैन आई कॉल इट अ बीटा कीटो एस्टर? कैन आई कॉल इट अ बीटा कीटो एस्टर? देखो, since in this entire compound carboxylic acid is the main functionality. Carboxylic acid is the main functionality. So carbon attached next to this carbon will be your alpha carbon. इसके बाजू वाला carbon will be beta. Correct? So can I call it beta keto ester? Can I call it beta keto ester? Yes. Right? So again, it's a intramolecular condensation of a diester in the presence of base. This is the diester and this is your base. ठीक है. तो सबसे पहला base will abstract a proton, CH minus बनेगा. Then there will be a
nucleophilic attack. Your words important है, ठीक है? There will be a nucleophilic attack of this on the electrophilic carbon, new bond formation, and in this, why are we calling it condensation? Because C2H5 condensation reactions में हमेशा one small molecule is eliminated. यहाँ पे क्या eliminate हो रहा है? C2H5OH eliminate हो रहा है, ठीक है? बट ये साइक्लिक तो बन गया, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट साइक्लिक है. व्हाट इट्स फॉर्म्ड इज सब्स्टिट्यूट साइक्लिक. इसका हम आगे और प्रोसेसिंग करेंगे. डिकमन कंडेंसेशन यहाँ खत्म होता है, ठीक है? दिस इज इतना यहाँ तक डिकमन है, लेकिन इससे आपको क्या बनाना है? साइक्लिक अल्केन बनाना है, ठीक है? सो व्हाट यू विल डू इज सिंपली, सिंस इट्स एन एस्टर, you know we can easily hydrolyze ester, yes or no? Acidic and base both hydrolysis, ester hydrolysis, there are 8 mechanisms, ठीक है? लेकिन अगर हम हाइड्रोलाइज कर देंगे तो दिस COO C2H5 will get converted to what? Will get converted to what? COOH, yes or no? आप एस्टर को हाइड्रोलाइज Yes. करोगे तो क्या बनेगा? COH बनेगा. ये COH को अगर मुझे बाहर निकालना है, आई कैन डू दैट बाय सिंपली हीटिंग इट एट हाई टेम्परेचर्स. CO2 will go out, ठीक है? When CO2 goes out, what you will get is this CH2, C double bond O, CH2 and CH2. Right now it is a cyclopentanone. 5 कार्बन है लेकिन कीटोन है. साइक्लोपेंटेनोन को अगर मुझे साइक्लोपेंटेन बनाना है, डू यू नो ऑफ एनी मेथड, do you know of any method where you can convert a C double bond O to a CH2? Do you know of any reaction where you can convert a C double bond O to a CH2? पता है? Again a name reaction and a very important reaction, carbonyl chemistry. Anyone? Anyone? बता दूं? Have you heard? Wolff-Kishner reaction. Yes, Dikshi, very correct. ठीक है? So you have 2 reactions actually. The one is Wolff-Kishner reduction and one is Clemenson's reduction. ये 2 reactions हैं, Wolff-Kishner reduction and Clemenson's reduction. इन दोनों रिएक्शन में क्या होता है? आपका जो कार्बोनिल है C डबल बॉन्ड O जो है वो CH2 बन जाएगा, ठीक है? दोनों में फर्क क्या है? रिएजेंट का फर्क है. इन Clemenson's reduction you have zinc amalgam. Amalgam is nothing but mercury. Zinc amalgam in HCl, concentrated HCl. This is called as Clemenson's. ये जो reagent है इसको Clemenson's reagent बोलते हैं. So in Clemenson's reaction you are using zinc amalgam in HCl. If you have a acid sensitive compound, you can go for Wolff-Kishner, which is nothing but hydrazine in NaOH. Hydrazine is nothing but NH2NH2. So hydrazine in NaOH. देखो एक रिएक्शन पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट में हो रहा है, एक रिएक्शन पूरा बेसिक एनवायरनमेंट में हो रहा है. ये आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा. प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनली? साइक्लोपेंटेन. यस और नो? समझा रिएक्शन सबको? यहाँ पे क्या हुआ? वी हैड अ डाइएस्टर. डाइएस्टर से हमने क्या बनाया? बीटा कीटो एस्टर बनाया वाया डिकमन कंडेंसेशन. फिर वो बीटा कीटो एस्टर के एस्टरिक ग्रुप को हमने पहले एसिड बनाया एंड देन वी डिड डीकार्बोक्सिलेशन. एसिड देन डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है? एंड फाइनली आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन we did Wolff-Kishner or Clemenson's reduction to convert it to the respective cycloalkane. क्लियर हो गया? लिख लो फटाफट. किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? पूछो, अभी पूछो. एक क्वेश्चन दो, ट्राई करोगे? Yes, sir. Okay. So say you have C double bond O, C2H5. This is reacting with sodium ethoxide.
ठीक है, गिव मी द प्रोडक्ट, जस्ट डिकमिन प्रोडक्ट दो, आगे वो क्लेमेंसन वगैरह करने की जरूरत नहीं है. आफ्टर डिकमिन प्रोडक्ट व्हाट विल यू गेट, टेल मी दैट. और मे बी आफ्टर डी कार्बोक्सिलेशन व्हाट विल यू गेट. मैकेनिज्म फॉलो करो. If anyone knows the answer, you can write in the chat box also. आया किसी को. Okay, Divya says cyclopentane. साइक्लोहेक्सेन आ रहा है क्या किसी को. Okay, 3 people have said cyclopentane. Good. Others, are you solving or you want me to solve? Ashiti, Jayashri, Runal, Neha, Pooja. Are you guys able to solve? Prapti, Rishika, Rutuja. Are you guys able to solve? Or you want me to solve? Okay, Ashiti is saying cyclopentane. Okay. देखो, बहुत सिंपल है गाइस. दिस व्हाट आई हैव गिवन यू इज नथिंग बट प्रीवियस एग्जांपल ओनली. जो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया वही है ये. लुक एट द नंबर ऑफ कार्बन्स. 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन्स. यहाँ देखो प्रीवियस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6. I have given you the same example. The only difference being I have written it in a cyclic form, क्योंकि in your exams many a times it will be seen in this form. They will not give you an extended form CH2 CH2 लिख के नहीं देंगे. They will give you in a condensed form. ठीक है. And the two mistakes that commonly students do is, first of all, looking at the condensed form, the first thing, the first image that your mind will draw is a cyclohexane. ठीक है. और आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं cyclohexane होगा for sure. And students in that nervousness and GPAT का tension, they will immediately mark cyclohexane. देखने में ही cyclohexane जैसा लग रहा है वो. ठीक है. But it will not form a cyclohexane. It will form a cyclopentane. ठीक है. If anyone has been unable to solve, I'm showing you how it is forming. देखो यहाँ पे. ठीक है. So ये वाला कार्बन के बाजू में जो कार्बन है, base will abstract a proton from this carbon, form a negative charge here. ठीक है. This negative charge will attack to here at this position. जब ये अटैक करेगा तो ये बाहर चला जाएगा. ठीक है. तो वो अटैक होने के बाद क्या है स्ट्रक्चर, यू हैव अ सी डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है. इस कार्बन का, ठीक है, एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसके साथ.
ये नया बॉन्ड है, और इसी कार्बन पे यू हैव अनदर व्हाट, कार्बन विथ अ COO C2H5, ठीक है। सो दिस इज द डिकमिन प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। इसके बाद आपको इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, followed by decarboxylation and finally Wolff-Kishner reduction. Clear? किसको है डाउट इसमें कि आगे बढ़े आगे? No, sir. All right. This was a very important reaction. Okay. Claisen condensation भी similar चीज होगा, but in Claisen condensation you will have two different esters. They will not be in the same compound. The esters will be here and there. ठीक है. Now this was, I think, the second reaction. The third reaction is another name reaction called as Simmons-Smith reaction. Simmons-Smith reaction. Now, in this reaction, it is actually a reaction of an alkene with methylene iodide. It's a reaction of an alkene with methylene iodide. ठीक है, पहले रिएक्शन लिख देता हूं मैं, एंड देन आपको इस रिएक्शन की कुछ खास बातें बताता हूँ, ठीक है। सो विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी alkene. Let us take CH3 CH double bond CH2. ठीक है, the first member which is which is propene, because we cannot take ethene. Okay, so cyclic structures बनाने के लिए minimum 3 कार्बन चाहिए, तो first is propene. Now when this reacts with CH2I2, this is methylene iodide. ठीक है, methyl iodide is different, methylene iodide is different. ठीक है, so you have prop1ene, it reacts with your methylene iodide in the presence of zinc and copper. This is working like a catalyst. ठीक है, what you get is CH3C CH2, ये as it is है, यहाँ भी आपको जो CH था वो CH2 बन जाएगा, and this methylene का CH2 will actually come and join here. So it's like an addition across double bond, something like that. ठीक है, but it is not exact addition because एक ही molecule add हो रहा है दोनों में. Fine. So you have CH3 CH double bond CH2 propene, या prop1ene reacting with methylene iodide in presence of zinc copper to give you the respective cyclopropane structure, which is substituted. This is a substituted cyclopropane, है ना। आप बोलोगे सर ये तो 3 कार्बन यही थे और फिर यहाँ पे आपने और एक कार्बन ऐड कर दिया है, करेक्ट, बट इट इज नॉट साइक्लोब्यूटेन, इट इज साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इट्स अ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन, सो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन टाइप ऑफ मॉइटी। ठीक है, अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है? सर यस, वहां पे CH2 आएगा कि CH आएगा सेकंड कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे CH आएगा। 1 2 3 4 4 वैलेंसी, CH आएगा। हाँ सर। वैलेंसी कभी भी 4 ही होगी, इट विल नेवर बी 5। ठीक है, नाउ व्हाई आई सेड दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, एंड ये रिएक्शन की खास बात क्या है? ठीक है, इस रिएक्शन की खास बात यह है कि इट इज अ टाइप ऑफ अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। हैव यू हर्ड ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन? सुना है कभी? इट्स अ ब्रॉड टर्म। ठीक है, पेरीसाइक्लिक के अंदर ही काफी कुछ आते हैं। डील्स अल्डर रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, सो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस व्हिच ऑकर इन वन सिंगल स्टेप। ठीक है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, दे आर रिएक्शंस व्हिच ऑकर इन वन सिंगल स्टेप. Will not go into details of that. There will be a different session on pericyclic reaction because it is there in your GPAT. But nevertheless, it is a type of pericyclic reaction specifically belonging to the cycloaddition class. Specifically belonging to the cycloaddition class. ठीक है, cycloaddition is a type of pericyclic. Diels-Alder is a type of cycloaddition only. ठीक है, there are 3 types of pericyclic reactions: electrocyclic reaction, cycloaddition reactions, and sigmatropic rearrangement reaction. इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, साइक्लोएडिशन में 2 रिएक्शंस है, 2+2 साइक्लोएडिशन एंड 4+2 साइक्लोएडिशन। 4+2 साइक्लोएडिशन में आपका आता है Diels-Alder. सो इट्स अ टाइप ऑफ साइक्लोएडिशन. साइक्लोएडिशन नाम इटसेल्फ इज सेइंग
it is addition of a cyclic additions. ठीक है, you can form a cyclic compound by addition. If I want to show you an example of a deal zeder, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, अभी के लिए इतना समझ लो. दिस इज अ साइक्लोब्यूटाडाइन रिएक्टिंग विद इथीन. ठीक है, व्हाट इट फॉर्म्स इज दिस cyclohexene. Cyclobutadiene reacting with ethene, what it forms is a cyclohexene. ठीक है, सो खाली इतना समझो, इस रिएक्शन में होता क्या है. there is a new bond formation. there is a new bond formation between the terminal carbons. all of you agree क्या हो रहा है? there's definitely a new bond formation between the terminal carbons, yes or no? तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये बॉन्ड के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे, इस बॉन्ड के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे. नाउ दिस कार्बन कैन नॉट हैव 5 वैलेंसी, इसलिए ये यहाँ शिफ्ट होगा एंड दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग अ डबल बॉन्ड हियर. ये समझ रहा है सबको? हम डीजर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको, व्हाई एम आई शोइंग यू दिस एग्जांपल इज बिकॉज सी द बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग, okay, is occurring at the terminal ends. It is occurring at the terminal. ठीक है, छोड़ो डील सेटर हम बाद में डिस्कस करते हैं इन डिटेल. ठीक है, for now just remember that Siemens-Smith reaction is also a type of a pericyclic reaction. ठीक है, ठीक है, इसको एक चिलोट्रॉपिक रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक विच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक चिलोट्रॉपिक रिएक्शंस. नाम थोड़ा अलग है, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या है इसका मतलब इस, देखो जो दो नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, देयर आर टू न्यू बॉन्ड्स व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड. ऑल ऑफ यू एग्री? वन इज दिस, वन इज दिस, है ना? दो नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. अब इन दो नए बॉन्ड्स जो फॉर्म हो रहे हैं, इट इज फॉर्मिंग ऑन द सेम कार्बन एटम. यस और नो? यस और नो? यस सर. डील सेल्डर जो मैंने ऊपर बनाया था, इसमें हम जो बॉन्ड्स बना रहे हैं, नए बॉन्ड्स जो हम बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ऑन डिफरेंट कार्बन. दिख रहा है, ये एक कार्बन है, ये भी एक दूसरा कार्बन है. भले से इट इज साइक्लो एडिशन, भले से इट इज फॉर्मिंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, but the bond is being formed at two different centers, at two different carbons. The new bonds which are forming, they are forming on two different carbons, whereas here the new bond which is forming on the same carbon. That is why it is called as a chelotropic reaction. It's a specialized cycloaddition. ठीक है, it's a subdivision of cycloaddition. Pericyclic, it's a pericyclic reaction. ठीक है, but the difference being in normal pericyclic reactions, you have the new bonds forming at two different atoms, whereas in this it is forming on the same atom. ठीक है, ये लिख लिया डेफिनेशन किलोट्रॉपिक का. the new atoms are forming on the new bonds are forming on the same atom. ठीक है, बढ़े आगे. यस सर. यस ओके, सर. एक एग्जांपल देता हूं आपको. ट्राई टू सॉल्व दिस. आई हैव अ साइक्लोहेक्सीन एंड आई एम रिएक्टिंग इट विथ दिस सेम CH2I2. प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे बताओ. यू कैन शो मी द प्रोडक्ट इन योर कैमराज. आप जूम करके दिखा सकते हो मुझे. साइक्लोहेक्सेन, नोप. आपका दिल भी साइक्लोहेक्सेन, बट it will not be just cyclohexane. It will be a cyclohexane with an additional ring. Yes or no? देखो ये एज इट इज है. जहां पे आपका डबल बॉन्ड था वहां पे
ये बनेगा, है ना। सेम चीज, जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे आप एक साइक्लोप्रोपाइल बना दो, जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे आप एक साइक्लोप्रोपाइल बना दो। कैन आई से इट इज नथिंग बट अ बाइसाइक्लिक सिस्टम? कैन आई कॉल इट अ बाइसाइक्लिक सिस्टम, यस और नो? Yes. So this is also a reaction of, that's what, this reaction is also helpful to form bicyclic systems, and that is why it's a type of a pericyclic reactions. I told you bicyclic हम किससे form करते हैं, pericyclic reaction से form करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। इसका नॉमेनक्लेचर मैं अभी नहीं दे रहा आपको, हम बाइसाइक्लिक डिस्कस करेंगे तब इसका नॉमेनक्लेचर बताऊंगा। नाउ द लास्ट रिएक्शन वाज फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल रिडक्शन करना है आपको। से फॉर एग्जांपल आई हैव दिस बेंजीन, ओके, तीन अनसैचुरेशंस है। इफ आई रिएक्ट इट विथ 3 molecules ऑफ H2, ठीक है, इफ आई एम डूइंग रिडक्शन 3 molecules ऑफ H2, टोटल कितने 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऑल 6 पोजिशन पे। ठीक है, कैटलिस्ट या कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, यू विल गेट द रिस्पेक्टिव साइक्लोहेक्सेन। वेरी वेरी सिंपल टेक्निक, इट्स अ सिंपल रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, सिंपल रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड्स। बढ़े आगे। अब प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यू जस्ट नीड टू नो वन थिंग, ठीक है, दैट द मेल्टिंग पॉइंट्स and the boiling points both, okay, the melting points and the boiling points of these cycloalkanes okay, the melting point and the boiling points of these cycloalkanes, they will increase with increase in the molecular weight. इसके ऊपर आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, द ट्रेंड, ओके। So melting point and boiling point of these cycloalkanes, they increase with an increase in the molecular weight of these compounds. ठीक है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बेसिकली जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाओगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा एंड उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड अगर रिएक्शंस की बात करें हम इन कंपाउंड्स की, तो ये कंपाउंड दो रिएक्शंस अंडरगो करते हैं। ठीक है, वन इज अ टाइप ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वन इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शंस। ये एडिशन रिएक्शंस को रिंग ओपनिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, आई टोल्ड यू दीज रिंग्स कैन ओपन वेरी इजीली, ओके। हम अभी उनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे इन सम टाइम। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन वाइज, ठीक है, फर्स्ट जो हम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट यू हैव सीन इन अल्केन्स। अल्केन्स याद आ रहा है? आई टोल्ड यू अल्केन्स डू नॉट अंडरगो एनी रिएक्शंस इजीली, ओनली वन रिएक्शन, दैट आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, H nu। याद आ रहा है? यस और नो? Yes. So that same, these are also what? These are cycloalkanes only, no? At the end of the day, they are alkane, right? So they will also react. I'll take an example of a simple cyclohexane. Okay, if you react it with any halogen in the presence of H nu, what will you get? You get a cycloalkyl halide, and of course HCl. H बाहर गया तो HCl. Same simple reaction है। ठीक है, you can react with any cyclic alkane if you undergo halogenation reaction in presence of UV light or H nu। ठीक है, H nu or UV light, it will give you the respective alkyl halide, cyclic alkyl halide, which is saturated, not aromatic। ठीक है, so that is a substitution reaction। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस की अगर बात करें, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, कोई भी चीज ऐड करोगे, जैसे अल्कीन्स में कैसे हम दो चीजें ऐड करते हैं वैसा होगा कुछ। ठीक है, सो इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शंस आई विल सिंपली ऐड हैलोजेंस ओनली। ठीक है, जनरली सीन विथ हैलोजेंस। व्हाट विल वी डू इज विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ साइक्लोप्रोपेन
ठीक है, इसको जब आप कोई भी हैलोजन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CCl4, एंड दिस रिएक्शन यू हैव टू डू इन डार्क कंडीशंस, नो लाइट, दिस इज लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस। ठीक है, रिंग ओपन होगा, तो इफ सपोज इमेजिन करो इफ दिस ring is opening, the addition will be at the terminal carbons. ठीक है, so when the bromine is getting added up, it will get added up at the terminal positions, bromine and bromine, CH एक दो दो, CH2 and another CH2, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो, करेक्ट, सिंपल एडिशन। ठीक है, so it's a ring opening type of reaction. बढ़े आगे। Yes. Yes. ओके, तो हमने आज कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ स्टार्ट किया था। तो IPS इज डन, प्रेपरेशन इज डन, रिएक्शंस आर डन। साइक्लोअल्कीन्स अभी नहीं करते हैं, साइक्लोअल्कीन्स हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस पे डील का आई वांट टू गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ डील एंड हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ डील। बट सिंस साइक्लोअल्कीन्स इज गोइंग ऑन, लेट्स कंटिन्यू विद साइक्लोअल्कीन्स एंड फिनिश ऑफ द फ्लो ऑफ साइक्लोअल्कीन्स। ठीक है, तो अब साइक्लोअल्कीन्स में व्हाट इज रिमेनिंग आर द थियोरीज। ठीक है, what was the first theory? The first theory was Bayer strain theory, also called as angle strain theory. ठीक है, नाउ देखो नाम से ही समझ में आता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंगुलर स्ट्रेन की। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस थ्योरीज, टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ दीज साइक्लिक अल्केन्स। हम थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ दीज साइक्लिक अल्केन्स। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, सिंस दे आर साइक्लिक compounds which are saturated, since all of these are cyclic compounds which are saturated in nature, what is the hybridization of each carbon? What is the hybridization of each carbon? बताओ क्या होगा, अल्केन में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन्स का? बोलो। sp3. sp3, इतना क्या सोच रहे हो गाइस, sp3 hybridization. Okay, so all the carbons are supposed to be sp3 hybridized. When I say sp3 hybridized, what is the bond angle for a sp3 hybridization? The bond angle for sp3 hybridization is 109.5. 9 degrees, हाँ 109.5 पकड़ लो। ठीक है, now what Bayer is saying is in cyclic alkanes, ठीक है, all the carbons which are there, okay, if they are deviating, from this 109 degrees 5 minutes, if the bond angle of the carbons in a cyclic form, if it is deviating from this 109, it will lead to an angular strain. Okay, what he said is, if the bond angle deviates, from 109 degree 0.5, ठीक है, इससे deviate होता है, it will lead to something called as an angular strain in the molecule. Now you tell me, if any molecule, okay, is having strain in it, any type of strain, okay, will that molecule be stable? There are different type of strains, no? There is angle strain, there is steric strain, there is one more is there, no, the torsional strain. तीन टाइप के strains होते हैं, ठीक है, बट strain का मतलब क्या है, molecule is in a stress. मॉलिक्यूल अगर स्ट्रेस में है तो वो स्टेबल है क्या? एनीथिंग व्हिच इज इन स्ट्रेस इज नॉट नेवर स्टेबल, राइट? तो ये एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुनो, ये जो एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी
क्या होगा, क्या होगा, कम होगा। जिस कंपाउंड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, एंगुलर स्ट्रेन है, क्योंकि बेयर जो थ्योरी है वो एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ द एंगुलर स्ट्रेन इज वेरी हाई, डेफिनेटली दैट मॉलिक्यूल विल बी वेरी लीस्ट स्टेबल and it will not remain in the cyclic form, it will open up, the ring will open up. इसलिए साइक्लोप्रोपेन को साइक्लिक फॉर्म में रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। यहां तक समझा सबको कि क्या बॉन्ड एंगल की क्या बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सिंस ऑल द कार्बन्स इन योर साइक्लिक अल्केन्स आर sp3 hybridized, the bond angle is ideally supposed to be 109 degrees, ठीक है। बट जो आपके पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इनके बीच में how much is the difference from this, how much is the deviation from this 109 will decide which of these cyclic structures is the most stable. इतना समझा सबको, है ना? Yes, Okay. sir. Now if you cyclopropane में if you see the angle is 60 degrees, the angle is 60 degrees, so 109 minus 60 कितना होगा, कितना है, डेविएशन कितना है, somewhere around 49, Yes, sir. ठीक है। तो समवेयर अराउंड 49 डिग्रीज का डेविएशन है। इसमें देखो साइक्लोब्यूटेन 90 डिग्रीज, साइक्लोपेंटेन के केस में द बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्रीज एंड साइक्लोहेक्सेन के केस में द बॉन्ड एंगल इज अराउंड 120 डिग्रीज। तो बेस्ड ऑन दीज बॉन्ड एंगल्स व्हाट ही सेड इज साइक्लोप्रोपेन is the least stable, क्योंकि बहुत स्ट्रेन है, देन साइक्लोब्यूटेन, अब साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन में ही सेड साइक्लोहेक्सेन इज लेस स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। ये किसने बोला है, किसने बोला है, ये बेयर ने बोला है, ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी बोल रही है। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, आर दे टेलिंग यू टू अरेंज, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं जीपीएट में, दैट अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड दे विल गिव यू साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, एंड दे विल टेल यू अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एज पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी। सो इफ दे से एज पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी, दिस इज द ऑर्डर। समझा? तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी बोलेंगे तो बेयर ने क्या बोला था कि अगर एंगल से थोड़ा भी डिविएट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल में एक एंगुलर स्ट्रेन डेवलप करेगा जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल होंगे। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज दिस एंगुलर स्ट्रेन उतना अनस्टेबिलिटी होगा। सबसे ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में है, इसलिए सबसे कम स्टेबल वही है। फिर है साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन में इफ यू सी साइक्लोपेंटेन इज वेरी मच नियर बाय टू 109, yes or no, it is very much nearby to 109, so इसलिए it is the most stable. साइक्लोहेक्सेन again it is 120। अब साइक्लोहेक्सेन के आगे का तो बात ही नहीं कर पाए बेयर, क्यों, क्योंकि आफ्टर साइक्लोहेक्सेन there is something called as negative strain which is coming, है ना, the values is deviating more towards the negative side and a strain cannot be negative, ठीक है, स्ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव स्ट्रेन को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, इनफैक्ट दिस वाज अ बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। इट कैन नॉट, इट डज नॉट टॉक अबाउट, विल टॉक अबाउट द लिमिटेशन बट इट डज नॉट टॉक अबाउट द लार्ज रिंग सिस्टम्स व्हिच इज 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर रिंग्स, दे आल्सो एग्जिस्ट। 7 मेंबर रिंग एग्जिस्ट करते हैं, आपके ड्रग स्ट्रक्चर्स में भी एग्जिस्ट करेंगे इनफैक्ट 7 मेंबर रिंग्स, ठीक है। बट से नेविरापिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे उसमें देयर इज अ 7 मेंबर रिंग अटैच्ड, ठीक है। आपके एंटी डिप्रेसेंट्स में यू हैव ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, फिनोथायाजीन्स जो होते हैं, थायाजीन इज नथिंग बट फिनोथायाजीन्स में यू हैव अ 7 मेंबर रिंग अटैच्ड, ठीक है। तो जो लार्जर रिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात ही नहीं कर पाए। व्हाट ही सेड इज लार्ज रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इन द रिंग फॉर्म, सिंस देयर इज अ नेगेटिव स्ट्रेन कमिंग, दे विल नॉट एग्जिस्ट इन अ रिंग फॉर्म, दे विल ओनली एग्जिस्ट इन अ स्ट्रेट चेन फॉर्म, ऐसा बोल दिया था बेयर ने, which is wrong. Now we know it is wrong, that time it was not known, ठीक है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने हमें ये ऑर्डर दिया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोपेंटेन।
बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली ओके, साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। ये प्रैक्टिकली था, ये एक दूसरा लिमिटेशन है बेयर थ्योरी का, ठीक है। बेयर थ्योरी कुड नॉट जस्टिफाई द एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेंड दैट साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, क्योंकि एज पर बेयर व्हाट ही सेड इज साइक्लोहेक्सेन विल बी लेस स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, बट प्रैक्टिकली इट इज द रिवर्स एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, ठीक है। एक लिमिटेशन क्या था, एक लिमिटेशन ये था कि आपके जो लार्ज लार्ज रिंग है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव स्ट्रेन, दैट इज वन लिमिटेशन की वो गलत है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि साइक्लोहेक्सेन इज लेस स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, नो इट्स रॉन्ग, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल, बट ही कैन नॉट प्रूव दैट, ठीक है। एंड अनदर थिंग दैट ही सेड इज, आई मीन लिमिटेशन क्यों हुआ ये, is because he was assuming that all molecules, not molecules, rings, all the rings are planar, all the rings are coplanar, या फिर all atoms in the ring are coplanar. What it means is, ठीक है, रिंग के बैकबोन एटम्स जो हैं, ठीक है, सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, उनका एजम्पशन ये था बेयर का, ठीक है। ही वाज लुकिंग एट द टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, so टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ऑल द एटम्स विल लाई इन द सेम प्लेन, बट व्हेन अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन अ थ्री डायमेंशन, okay, some atoms will be in some other plane also, that is where cyclohexane comes in picture. cyclohexane के different conformations याद है आपको, बोर्ड कॉन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोर्ड कॉन्फर्मेशन, चेयर कॉन्फर्मेशन, याद है थोड़ा बहुत, Yes. राइट। सो उसमें हमने क्या देखा, वी सॉ हाउ अ साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर स्ट्रक्चर इज गोइंग फ्रॉम प्लेनर टू थ्री डायमेंशन, ठीक है। it undergoes some conformational changes, twists and modifications in the bond. When there are twists and modifications in the bond happening, imagine karo, if this is my compound, ठीक है, this pen that you can see the pen, right, this is my compound, ठीक है। अभी ये एक प्लेन है, समझो ये वाला जो पेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है। अगर मैं इनके अंदर कॉन्फर्मेशन ला रहा हूं, इज द प्लेन ऑफ दिस पेन चेंजिंग और नॉट चेंजिंग, इट इज चेंजिंग, राइट। So planes change होंगे, when a molecule is existing in 3D, they always undergo conformational changes, the planes will change, all the atoms will not lie in the same plane, that is what is, Bayer could not justify. बेयर ने क्या बोला कि सारे जो जितने भी रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल द रिंग के जितने भी एटम्स है, दे आर इन द सेम प्लेन, इफ दे आर इन द सेम प्लेन फिर ये एंगल का प्रॉब्लम आएगा। साइक्लोहेक्सेन के सारे कार्बन अगर सेम ही प्लेन पे रहेंगे, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बट वी नो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट एज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज दिस चेयर फॉर्म। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन देखो, डू यू थिंक दे आर इन द सेम प्लेन? नो, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, सो डेफिनेटली प्लेन ही अलग है, तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कुछ नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेन। कहने का मतलब ये है कि इन थ्री डायमेंशन मॉलिक्यूल arranges itself in a fashion that the angular strain is nullified. Why is the molecule undergoing conformation? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये समझना है, मॉलिक्यूल कॉन्फर्मेशन क्यों कर रहा है, why is there a rotation in the bond? क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, cyclohexane is not stable in this form, cyclohexane is not stable even in this form, तभी तो वो कॉन्फर्मेशन करके चेंजेस ला रहा है, दैट इज व्हाई इट इज द बॉन्ड्स आर रोटेटिंग एंड गिविंग डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस टू सी which is the most stable conformation which is free of all the strains, and that is your chair form. cyclohexane बोर्ड फॉर्म में भी नहीं रहता, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में भी नहीं रहता, you cannot isolate a cyclohexane in a twist form state, ठीक है। the most stable form is the chair form, but to get to the chair form there has to be conformational changes, and when the conformational change is happening there will definitely be some amount of changes in the planes. So the assumption that all the atoms of the ring are coplanar is wrong, and that's the limitation of Bayer strain theory, ठीक है। तो Bayer strain theory क्या था, it is talking about angular strain. what it is saying is कोई भी मॉलिक्यूल अगर 109 डिग्री से डिविएट कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके अंदर स्ट्रेन आएगा जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर द टॉप थ्री, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन तक ये सच है, इसके आगे देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर। ये समझा सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। बढ़े आगे? Yes.
ओके, सेकंड थ्योरी जो था वो था क्या? कोल्सन एंड मोफेट theory. Okay, this what they tried to do is they tried to understand, or they tried to explain the साइक्लोप्रोपेन का स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करेगा। हमने तो ये बोल दिया कि इट इज अनस्टेबल, इट इज ट्रू, इट इज अनस्टेबल, बट स्टिल in some scenarios or in some cases cyclopropene molecule can exist. So if it is existing, how is it existing? How is it not getting affected with the bond strain? क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स बनने हैं वो बॉन्ड 60 है, तो ये बॉन्ड स्ट्रेन को अफेक्ट नहीं होना है ना। आपके मॉलिक्यूल को स्टेबल रहना है, या मॉलिक्यूल हैज टू बी इन द साइक्लोप्रोपेन फॉर्म, इट शुड नॉट ओपन द रिंग। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दैट what they try to do is they try to understand how these bonds were formed, how the bonds of cyclopropanes were formed। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, कोई भी बॉन्ड फॉर्म होने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, yes or no? To form a sigma bond you have something called as an axial overlap, ये p orbitals हैं। So when two p orbitals are combining, it will lead to what? It will lead to formation of a sigma bond, yes or no? Yes or no? This is Yes, the sir. axis। ठीक है, what Coulson and Moffitt said is the bonds which are formed in cyclopropane are not sigma bonds। Sigma bonds are very stable, they are actually because of cyclic overlap, है ना, not cyclic, they are actually due to over axial overlap। ठीक है, so why cyclopropane is existing in the first place? Okay, to explain that, what they first said is cyclopropane does not exist as a sigma sigma bond, rather it exists with the help of something called as bent bonds। Bent bonds, okay, the bonds are bent, the bonds are bent like this, it's not a straight bond, and since they are bent, of course they are unstable, they are weak, not unstable, they are weak, they are weaker bonds than sigma bond, but still they are bent bonds। ठीक है, इसलिए इसको bent bond theory भी बोलते हैं। ठीक है, and when you show the overlap, okay, you can also say that it looks like a banana, that is why the banana bond theory name came। okay, so here you have one, here you have one, here you have one, and here you have one। ठीक है, ये दोनों ज्वाइंट रहेंगे, सो इसलिए इसको बेंट बॉन्ड थ्योरी या बनाना बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। तो होता क्या है दैट द टू कार्बन्स विच आर देयर, द टू कार्बन्स विच आर देयर विच हैव टू अंडरगो axial overlap are not undergoing axial overlap, rather they are undergoing overlap something like this। सपोज देखो एक्सिस यहाँ पर है, ओवरलैप यहाँ होना था, लेकिन सिंस ऐसा ओवरलैप हो रहा है, नाउ द एक्सिस विल बी समथिंग लाइक दिस। Agree, all of you? Axis क्या है? Axis is the plane or the path through which electrons move. Whenever there is an axial overlap happening, okay, axial overlap is always in the axis, है ना, तो electrons भी ऐसे ही move होंगे, and इसलिए the bond is formed as a straight sigma। ठीक है, but in case of cyclopropane, the overlap is अब kind of ऐसा axial नहीं है, ऐसा है। ठीक है, ऊपर ऊपर है, p overlaps ऊपर है, axis यहाँ पर है, so the new axis is like this। ठीक है, तो electrons are moving like this, and since electrons are moving like this, the bond which is formed, because bond is what, bond is formed from what, electrons, the bond which is formed is said to be a bent bond, इसलिए इसको बोलते हैं bent bond theory और banana bond theory। ये सिर्फ साइक्लोप्रोपेन की बात करता है। ठीक है, they are trying to understand why cyclopropane is unstable and still how does it exist। so it is unstable no doubt because of angle strain, but it exists because it is not forming a sigma bond। what they said is it is not forming a sigma bond, rather it is forming something called as a bent bond or a banana bond, इसलिए इसको बोलते हैं bent bond theory, BBT या banana bond theory। ये समझा सबको? Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? इतना ही समझना है आपको, सी ओनली थ्योरी यू हैव टू अंडरस्टैंड। बड़े आगे एक लास्ट थ्योरी है which is the Shash and Moore theory।
ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे शैश एंड मोर, व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू एक्सप्लेन द और एक्सप्लोर द limitations of Bayer theory, limitations of Bayer theory. ठीक है, तो what Bayer said is, Bayer ने क्या बोला था कि all the atoms are coplanar, है ना. What Bayer said is all atoms in the ring are coplanar. What Shash and Moore said is, why is this the case? Because he was considering only the 2D structure of the molecules. ठीक है, what these two scientists said is they need not be coplanar. ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है अभी. ठीक है, so they said a molecule exists in a 3-dimensional space. So there is always an y-axis, an x-axis, and also a z-axis. ठीक है, I'll give you a very simple example, बच्चों. This what you see right now, what is the angle between these two? आप सामने से देख रहे हो ना ये मेरे स्क्रीन पे, you can see me, right? I am holding 2 pens. Okay, what is the angle between the 2 pens? 90 degree. 90 degree. सेम 2 पेन को मैं होल्ड कर रहा हूं. Now what is the angle? Now what is the angle? It's acute. Looks like acute. Yes. Yes. यहां से देखोगे तो आपको 90 दिख रहा है, यहां से देखोगे तो आपको acute दिख रहा है. Which one is true? None of them. Why? Because you are considering 2-dimensional space. आप जो देख रहे हो आप एक साइड से देख रहे हो, तो आप एक साइड से देख रहे हो तो आपको 2 ही एक्सेस दिखेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दोस 2 एक्सेस यू आर सेइंग दैट इट इज द 90 और 60 डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम व्हिच एंगल यू आर व्यूइंग, बट यू आर नॉट कंसीडरिंग द 3-dimensional structure, 3-dimensional plane. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इवन Shash and Moore said कि atoms will orient themselves in different planes. They need not be in the same plane, need not be coplanar. They will orient themselves in different planes such that the angle remains same and there is no angle strain. समझ में आई बात? ठीक है, तो Shash Moore theory ने क्या बोला, that the atoms in the rings need not be coplanar. Okay, they can exist in different planes and therefore there is less amount of angular strains in these atoms, and that is why cyclohexane is, they actually found, it's also called as Shash and Moore theory of cyclohexane. They were actually trying to prove the point that cyclohexane is more stable than cyclopentane. They knew that, practically they knew that, but उसके पीछे का theory they came up with. Why is it so? ठीक है, so then after that stereochemistry of cyclohexane and all of those things came, but this is the story behind it. ठीक है, so 3 theory, Bayer strain theory also called as the angle strain theory, Coulson-Moffitt theory also called as the banana bond theory, and Shash-Moore theory also known as Moore's theory of cyclohexane या theory of cyclohexanes. ठीक है, so इतना revise कर लो अच्छे से. I hope you have written all the points and everything, and in the next class we will talk about cycloalkenes, Diels-Alder reaction. We'll talk about IUPAC of bicyclic and spiro compounds, and we will solve some questions on Diels-Alder and some questions on cycloalkanes in general, which have come in GPAT. ठीक है, any questions? Any questions? No, sir. All right, chalo then. Happy Sunday, guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.